और फर्स्ट टॉपिक हम इसमें लेके चल रहे हैं सेंटर ऑफ मास। Center of mass means point at which total mass of the object lies। वो पॉइंट जहां पर पूरी ऑब्जेक्ट का मास कंसंट्रेट होता है या लाई करता है, वो क्या कहलाता है? इज नोन एज सेंटर ऑफ मास। इज नोन एज सेंटर ऑफ मास। तो किसी भी तरह की ऑब्जेक्ट होगी, उसमें एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर सारा का सारा कंसंट्रेशन होगा, और उसी के अबाउट आप सारी ऑब्जेक्ट को डिस्कस करते हो, वो सेंटर ऑफ मास कहलाता है। आप सबसे सिंपलेस्ट कॉन्फ़िगरेशन लेके चलोगे ना, फॉर एनी सिंपलेस्ट कॉन्फ़िगरेशन फॉर टू बॉडी प्रॉब्लम, लेट इसको टू बॉडी प्रॉब्लम के बदले कहना चाहिए तो सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम हमने माना लेट एन ऑब्जेक्ट is made of two particles of masses m1 and m2. The location of these two particles, that is their position vectors, r1 and r2। तो हमने एज्यूम किया कि हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट से टू पार्टिकल सिस्टम है, m1 m2। इनका जो लोकेशन है सर r1, सेंटर ऑफ इसके पोजीशन वेक्टर r2। तो अगर इन दोनों को देखा जाए तो इन दोनों के बीच में एक इंटरनल अट्रैक्शन फोर्स होगा जो इस लाइन के अलोंग लगेगा, और ये सिस्टम जो है ना, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास किसी इस पॉइंट पर लाई करेगा। मान लीजिए दिस इज द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, जिसका पोजीशन वेक्टर RCM है। सो लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास of this twin particle system is RCA। आप देख सकते हैं their mutual attraction force due to which system is made अब इनके नाम लिख दीजिए। F12 द फोर्स ऑन 1 due to 2, इस पे लिख दीजिए F21 and F21। These are the internal forces. These are internal forces.
मान लीजिए सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स आ गया F1 F2 and F1 and F2 are external forces. So net force on the system will be F21 plus F12 plus F1 plus F2. ये जो फोर्स होना चाहिए, दिस फोर्स मस्ट बी F नेट यानी कि टोटल ये होना चाहिए M1 plus M2 into ACM. This ACM will be acceleration of center of mass. So M1 plus M2 into ACM equal to F1 plus F2 plus F21 plus F12. Since F21 ये न्यूटन थर्ड लॉ है, दोनों आपस में इक्वल और अपोजिट होंगे। F1 की वैल्यू मैं लेके चलूंगा M1 E1, F2 की वैल्यू आएगी M2 A2, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास में रिजल्ट रहेगा M1 plus M2 ACM इक्वल टू M1 A1 plus M2। आप देख सकते हो दिस इज द सम ऑफ द टोटल एक्सटर्नल फोर्स, तो ACM is M1 A1 plus M2 A2 upon M1 plus M2. This is the formula for the acceleration of the center of mass. Since ACM इसे हम लेके चलते हैं d square r अपॉन dt स्क्वायर, A1 को लेके चलेंगे d square r1 अपॉन dt स्क्वायर एंड A2 सो अगर मैं यहां पे देख के चलता हूं तो d स्क्वायर RCM ओवर dt स्क्वायर इट इज इक्वल टू M1 और आपका जो रिजल्ट आ सकता है आप उसको क्या लेके चल सकते हो RCM इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2। ये जो फॉर्मूला आपने बनाया ये टू पार्टिकल सिस्टम का है। दिस इज पेज नंबर 2 फॉर द n पार्टिकल सिस्टम। RCM, this will be equal to M1 R1 plus M2 R2 up to Mn Rn upon M1 plus M2 Mn। तो RCM algebraic sum of I equal to 1 to n Mi Ri upon algebraic sum of I equal to 1 to n Mi। ये सेंटर ऑफ मास की आप इक्वेशन लिखकर चलो। इन सेम वे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो मैं इसे VCM लिख सकता हूं सर। VCM इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2
up to mnvn upon m1 plus m2 up to mn, या फिर एल्जेब्रिक सम ऑफ I इक्वल टू 1 to n mi vi अपॉन एल्जेब्रिक सम ऑफ mi, जबकि ये 1 to n में लाई करती है। ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बनेगा। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास देन ACM, आप इसमें लेके चलोगे, डायरेक्ट इक्वेशन यूज कर रहा हूं मैं, I 1 to n mi ai अपॉन एल्जेब्रिक सम ऑफ I इक्वल टू 1 to n mi। ये जो है आपके पास में सिचुएशंस है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड मास ऑफ सेंटर ऑफ मास। हम मानकर चलते हैं NOT for two particle system, let center of mass lies at origin। मान लीजिए, तो मैंने कहा कि मेरे पास में ये एक 2D प्लेन x y, और मैंने माना कि मेरे पास में जो ट्विन पार्टिकल सिस्टम है वो कुछ ही है, m1 m2, टोटल डिस्टेंस इज r, ये डिस्टेंस r1, ये डिस्टेंस r। ये जो लोकेशन है सर, इस लोकेशन का नाम रख रहा हूं मैं सेंटर ऑफ मास। तो यहां पर RCM क्या हो गया बच्चों, 0,0। दिस इज पेज नंबर 3। अगर मैं RCM को देखूं तो RCM इज 0, सो m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2, इट इज इक्वल टू 0। इस बात का मतलब m1 r1 प्लस m2 r2 इक्वल टू 0। अब इसके दो मीनिंग हुए। नंबर 1, m1 r1 इक्वल टू माइनस ऑफ m2 r2, एक मीनिंग ये, ठीक है। अब जरा गौर से देखो, द प्रोडक्ट ऑफ द मास विद द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फिर आप इसको एक तो ये लेके चल सकते हो, अगर मॉड लगा देंगे तो m1 r1 इट इज इक्वल टू m2 r2। अदरवाइज आप कह सकते हो एल्जेब्रिक सम ऑफ mr इक्वल टू 0। ये जो mr है, इसका मतलब है दिस इज मोमेंट ऑफ मास ऑफ होल ऑब्जेक्ट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए एल्जेब्रिक सम ऑफ mr इज ऑलवेज इक्वल टू 0। बस आपने करना क्या है कि सेंटर ऑफ मास को रेफरेंस पॉइंट मान लीजिए, ठीक है। तो उस सिचुएशन में एल्जेब्रिक सम ऑफ mr इक्वल टू 0। अब अगर मैं मानकर चलता हूं कि मेरे पास में दीज आर द टू पार्टिकल्स, द वन हियर एंड द सेकंड हियर, m1 m2, the distance total between them is r, and suppose that this is the location of the center of mass, this is r1, this is r2। sir, this r will be taken as r1 plus r2। if I obtain the value of the r from here, r2 sorry, so r2 का स्केलर लेके चल रहे हैं, this is m1 r1 upon r2, so this is r1 plus m1 r1 upon r2, sorry m2। दिस इज m2। तो r1 की वैल्यू आएगी बच्चों m2 अपॉन, इसको सिंप्लीफाई करके m1 प्लस m2 इंटू r। मान लीजिए ये अगर r1 है तो r2 आप इसी तरह से लिख सकते हैं m1 अपॉन
m1 plus m2 into r. Clear? Any doubt regarding this? Anyone? No, sir.